Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से उस्ताद जी? अल्लाह का करम है, आप खैरियत से सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत से हैं। रमज़ान अल मुबारक का महीना बहुत ही करीब है, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। जी बेशक। तो उस्ताद मोहतरम, बैकग्राउंड से थोड़ी नॉइज वगैरह है तो थोड़ी लाइट लगना मुझे थोड़ा। जी आवाज आ रही है आपको? जी उस्ताद जी आ रही है आपके पास। हाँ, क्या आप कह रहे थे? असल में रात के वक्त घर में होता हूँ तो घर से क्लास लेनी पड़ रही है, वरना ऑफिस में असल में वो उधर असल में ऑफिस में नहीं होना तो घर जी पर थोड़ी नॉइज वगैरह आ सके तो नजरअंदाज कर देना। आवाज मेरी तरफ से ज्यादा आ रही क्या? यानी कि जो पंखा चल रहा है उसको कम कर दूं, क्या कह रहे हैं आप? म्यूट पे है, म्यूट पे। बोलो। Okay, ji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are going to start our session now. And वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Jazakallah khair. So we'll be having two sessions today. Number one, that is on Tajweed, and number अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam wa rahmatullah. Can you hear me, everyone? Okay, I've unmuted myself. Now, can you hear me, please? अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam wa rahmatullah. Can you hear me? Yes, we can Okay. hear. we can hear you. Okay. Yes. So, first of all, we are going to complete the Makharij today. Then definitely tomorrow we are going to have a thorough revision class. We'll revise everything, and in Arabic class we'll be discussing 4 to 5 concepts, and I'll also touch vocabulary today. I'll also discuss various points, various words with meaning, Arabic to English and Arabic to Urdu, inshallah, and I'll let you know different things as well. So now we are going to move towards 14th makhraj, and we are going to understand the makhraj or makharij of 3 huruf, 3 letters, that is za, sin, sad. These are the 3 letters we are going to discuss right now. This is makhraj number 14, and how these letters are to be pronounced. Now you see that there are the teeth in front of us, both teeth, means upper jaw and the lower one.
we have to connect both of them like this, and then we have to pronounce like za, sin, swad. Now, when we pronounce a za, sin, there may be a sound of whistle, okay? And swad, it is to be pronounced bit thicker, in a thick manner. And in Urdu, we say mota padna hai, right? Z, sin, swad. Do you understand this one? We have to connect the teeth, the upper portion and the lower portion together. And then we have to pronounce the, sin, swad. Okay, is that clear now? ओके अब उर्दू में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जी हमारे जो अभी मखरज नंबर 14 है, ये 3 हरूफ पे जिसको सफिरिया कहते हैं, सफिरिया। अब 3 हरूफ कौन से हैं? ज, सीन एंड स्वाद। इनको प्रोनाउंस करने का यानी कि इनका मखरज किस तरह, इनकी अदायगी कैसे होगी इन हरूफ की? मखरज कहते हैं निकलने की जगह को। जब हम इनको पढ़ेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे, ये पहले तो हमारी प्रैक्टिस है। तो ये दोनों यानी ऊपर और नीचे के दांतों को हम मिला लेंगे और उसके बाद हम तीनों जो हरूफ प्रोनाउंस करेंगे इनकी अदायगी करेंगे। मगर जो यानी कि पहले जो हरूफ हैं वो मोटे नहीं पढ़े जाएंगे, जो स्वाद है वो मोटा पढ़ा जाएगा। अब देखें, सुनिएगा मैं कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ, फिर आप मुझे जो है वो बताइएगा कि आपको बात समझ में आई है या नहीं आई है। अब मैं पढ़ता हूँ, ज़ा, सीन, आपको सॉरी, ये मेरे ख्याल में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो ये बात समझ में आई थी आपको? प्लीज बताइएगा। उस्ताद अभी कुछ आवाज नहीं आ रही थी, आपकी ब्रेक हो रही थी काफी। अच्छा, ठीक सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन हमने पहला जो आपने बताया था वो सुन लिया था, पहले जो बताया था। अच्छा, ठीक है। तो दोबारा मैं करता हूँ जी, ये मैं दोबारा प्रोनाउंस करता हूँ। ये जो 3 हरूफ हैं, ज़, सीन, स्वाद, दोनों अगले दांत हमने मिला लेने हैं और इसके बाद इसको प्रोनाउंस करना है। अब आप में से अगर कोई समझ गया तो प्लीज इसको आप रिपीट करें, प्रोनाउंस करके मुझे बताएं जी प्लीज। जा, शाबाश जी, चलें। सीन, वेरी गुड, स्वाद, जबरदस्त। आप कौन? सादिका। मैंने ज्वाइन कर लिया है अपनी लेक्चर में, बाद में सुनूंगी अपना वो वाला। चलें चलें, माशाल्लाह, वेरी गुड, ठीक है, आगे चलें जी। जी, और कोई बताए, और कोई पढ़े, शाबाश। जी जी, हाँ, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड जी। उस्ताद मोहतरम, जी जी, मुनीर है। हाँ, वेरी गुड मुनीर साहब, कम ऑन। जा, सीन, स्वाद। वेरी गुड, माशाल्लाह जी। गुलफेज साहब पढ़े, प्रोनाउंस करें जी। ज़ा, सीन, स्वाद। माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत अच्छा हो गया। अच्छा जी, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड मखरज, द नेक्स्ट मखरज, that is number 15. These 4 huruf especially, they are to be pronounced by the movement of lips. Okay, now the first one, that is fa, how we are going to pronounce that?
to pronounce fa are means these two teeth, they must touch the lower lip of ours, okay, and we have to pronounce it very softly, and we have to touch these two teeth with the inner portion of our teeth, means lips, the lower lip, not the lips, the lower lip. The front two teeth are to be touched softly with the inner side of our lower lip. Now, how it is to be pronounced? Like fa, 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 right? Then when we move towards ba, mim, and waw, see how these three are going to be pronounced. When we to connect both teeth together, like this one, ba, ba is to be pronounced. Ba, ba, and mim. Now, when we touched both teeth in a way that there was bit of moisture, there was moisture, okay, that was bit wet while pronouncing but when while pronouncing meme, there won't be a wet, it will be dry, means the dry portion is to be touched, like me. I repeat, when while pronouncing ba, we have to bring together both lips, but while pronouncing ba, the wet side of lips are to be connected. While pronouncing meme, the dry side of the lips are to be touched together. See how they are to be pronounced? Ba and vowel mean me. And while pronouncing wow, see how they means we have to just move the lips, how the lips are to be moved. Wow, wow. Okay, I'm repeating in Urdu. You can again see that how we are going to pronounce them. देखिए जी, ये जो हम फा को प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे दोनों जो दांत आगे ऊपर वाले हैं, ये हमारा जो होंठ है नीचे वाला, इसके अंदर साइड को हल्का सा टच करेगा और नरम पड़ा जाएगा, जैसे कि और जब हम बाकी तीन हुरूफ को प्रोनाउंस करेंगे यानी इनकी अदायगी करेंगे, जब बा को प्रोनाउंस करना है तो दोनों जो होंठ है उनको मिलाना है, मगर उनकी जो गीली साइड है वो मिलेगी आपस में, जैसे ये आपको फील भी होगा अंदर साइड। जब हम मीम प्रोनाउंस करेंगे तो जो होंठ मिलेंगे वो ड्राई साइड पे मिलेंगे, यानी जो बिल्कुल खुश्क होंगे। अब देखें कैसे, और जब वाव को प्रोनाउंस करेंगे यानी वाव की अदायगी होगी तो हमारे दोनों होंठ गोल हो जाएंगे और होंठों से प्रोनाउंस होगा, जैसे वाव वाव। ठीक है जी, समझ में आ गया? ये कोई डिफिकल्टी? नहीं उस्ताद, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी। हाँ नहीं, प्रैक्टिस तो करेंगे भाई, कल आपकी पूरी प्रैक्टिस सेशन होगा। कल हम कुछ भी मैं आपको नया नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मगर अभी आपको समझ में आ रही है और ये याद भी करने चीजें। Everybody has to remember this. जी अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद। Okay, means if somebody does not understand, you can raise your hand, you can ask me again and again. I don't mind anything, but you have to remember. First of all, you have to understand, then you have to remember, then you have to practice. Okay, that's why we are going bit by bit, slowly. I'm not in a hurry. जी अच्छा, अगेन इफ किसी ने नहीं समझा तो मुझे बताएं, मैं दोबारा ये बता देता हूं आपको। फा को कौन प्रोनाउंस करेगा आप में से, प्लीज? जी आपको आवाज आ रही है?
आई एम सेइंग फा को कौन प्रोनाउंस करेगा? आपको